And we have some more inputs coming in on this story. New Citizenship Amendment Act rules have been challenged before the Supreme Court. Now, various pleas, including that of the IUML, to be mentioned for urgent listing today. And these petitions seek immediate stay on the implementation of the new CAA rules notified by the Government of India. Our legal correspondent Ananya Bhatnagar is with us to give us more details on this. Ananya, can you tell us about the pleas that have been filed against the CAA rules? Well, definitely, various petitions, including that of the Indian Union Muslim League, has been filed before the top post of the country, seeking an immediate halt on, in fact, the implementation of these new rules that the government has recently brought in. While, these petitions go on to say that this is a law, and in fact, these rules too are discriminatory on the paths of religion. They single out one particular certain particular minorities, and in fact, leave out one particular minority group is what, in fact, has been stated by these petitioners before the Supreme Court. The matter is likely to be mentioned before, in fact, a bench headed by the Chief Justice of India, Dr. Justice D.Y. Chandrachud. Not only this, these petitions actually seek an urgent stay. So whether or not the Supreme Court, the first question that remains to be answered today is whether the Supreme Court would be allowing for an urgent listing of these particular petitions. When will these petitions be heard? And most importantly, whether or not a stay would be granted by the Supreme Court on the implementation of these particular laws. Because in the recent past, we've seen that whenever, if I take the example of the Delhi Services Bill, or the recent one being, in fact, the Delhi Services Bill, the Supreme Court had not stopped any kind of a thing on these particular laws, because remember that lawmaking is part of the legislature. It is the whole and sole business of the legislature. And whenever the Supreme Court actually intervenes, though definitely a power of judicial review remains with the Supreme Court, but it also has certain limitations. It cannot go beyond certain point, and that's something that would weigh upon with the arguments of the respondents today as well. So we'll have to wait and watch as to whether or not that urgent hearing would be allowed by the Supreme Court or not in this particular case, and secondly, whether or not a stay on the implementation of these new rules would actually happen or not. All right, Ananya, thank you so much for all those details. So a crucial hearing in Supreme Court today as far as the Citizenship Amendment Act is concerned. Now let's listen in to what the Hindu refugees have to say on the rules notified by the government on CAA. From the law CAA, now the focus has actually shifted to the politics around it. First, we heard what the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee had said. In fact, they had mentioned many points regarding why CAA is not for this country and why it's unconstitutional. On the other hand, Home Minister Amit Shah has also launched an all-out attack on all the opposition parties, naming each one of them starting from Rahul Gandhi to Mamata Banerjee. Well, once again, we are in one of the settlement camps in the national capital, and this is the Majlis Park settlement camp of the Pakistani refugee who've been staying here for a very long time. इस पे कई जो दिल्ली में नेता हैं और हिंदुस्तान में भारत में नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ये कानून गलत है. क्या आपको लगता है कि इन बयानबाजियों से आप लोगों को कोई फर्क पड़ता है? हाँ, फर्क तो बहुत पड़ता है. एक कानून जो केजरीवाल बोल रहे हैं, ये गलत बात है. क्यों, हमें पहले भी भारत के थे, अभी भी भारत के हैं. और जब 1947 में बंटवारा हुआ था, तभी हमारा माँ बाप वहाँ रह गए. इसी के लिए हमारा भारत देश है और भारत में रहेंगे, और कैसे भी करेंगे हम रहेंगे भारत में. परंतु केजरीवाल जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं. बंटवारा में नेहरू लाल ने भी वचन करा था कि जो हिंदू लोग हैं, बंटवारा हो जाए तभी हिंदू लोग भारत में जा सकते हैं, आ सकते हैं. ये वचन था. तो परंतु अभी जो ये केजरीवाल कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं. आज तक आपने यहाँ पे बहुत से लोग काम करते हैं आप लोगों के लिए. आपने किन किन लोगों को यहाँ पे देखा है ग्राउंड पे काम करते हुए आप लोगों के लिए? ये तो हिंदू परिषद आते हैं, आरएसएस वाले आते हैं, वो लोग आते हैं. वो बाकी तो और दिल्ली के केजरीवाल के लोग नहीं आते. वो आरएसएस वाले भी आते हैं, हिंदू परिषद भी आता है, मोदी के लोग बहुत आते हैं. ये काम ये देखा है, बाकी और किसी का काम नहीं देखा है. अच्छा, तो कैसा ये जो बोल रहे हैं कि किसी तरह का बर्डन बन जाएंगे, किसी तरह का बोझ बनेंगे आप भारत के ऊपर, ये सुन के क्या बोलना चाहेंगे आप? अरे हमने तो पाकिस्तान में चोरी नहीं की है, बाकी इधर आके चोरी क्या करेंगे, किसके बोझ क्या पड़ेंगे. हम तो
मलबा उठाएंगे और लेबर का काम करेंगे और खाएंगे, बस ये कर सकते, बाकी और काम नहीं कर सकते। हम तो पड़े हुए हैं नहीं, बाकी क्या आगे करेंगे। आज आप लोगों ने प्रदर्शन भी करा इसके खिलाफ मुख्यमंत्री के आवास के बाहर, क्या आपको तकलीफ है उनके बयान से? जी, ये तो मतलब कहीं पे भी जब ये रात से कल से सुना है तो मतलब लोगों में यहाँ पे इतना रोष था, क्योंकि ये दिल्ली के वो यूँ बोलते हैं वो दिल्ली के बेटे हैं, दिल्ली के वो मुख्यमंत्री हैं। तो जब पिछले 10-1 साल तो उनको भी हो गए यहाँ पे राज करते हुए, तो 10-1 साल में उनको क्या मानवता के आधार पे, या वो यूँ बोलते हैं दिल्ली के बेटे हैं तो बेटे के आधार पे उनको एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे कोई शरणार्थी आ रखे हैं, सिख परिवार है तो कुछ हिंदू परिवार हैं, भी जो रह रहे हैं वो सब वीज़ा पासपोर्ट लेके आए हुए हैं। ये उन रोहिंग्याओं की तरह नहीं है या अलग कुछ उनकी तरह नहीं है जो बॉर्डर पार करके तारों के नीचे से आ गए हों। और इन्हीं के मंत्री यहाँ का तो विरोध ये खुद कर रहे हैं, लेकिन इनके मंत्री जब रोहिंग्या कैंप लगा हुआ था तो रोहिंग्या कैंप में जाके वहाँ पे कूलर दे देते, वहाँ पे राशन दे देते, वहाँ पे सारी सुविधाएं मुहैया करा देते, और बाकायदा मीडिया पोर्टल पे ये नेता और इनके भी सारे सहयोगी ये डाल रहे थे। तो इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं, तो पता नहीं इनको क्या विरोध हो रहा है। This is the word which is actually coming in from these people. They say that this is not a political thing for them. This is mere issue which they've been raising for a very long time, and in fact they say they've been raising this issue. In fact, the government and in past also have been raising this very issue of giving refuge to the minorities in the countries. But now since this law has come out, now there is some sort of a political furor. But these people are also very well aware exactly what is happening with them, and in fact there is a sense of anger against these political comments. But as of now, they are quite in a celebratory mood itself.